I am a Professor Nilesh Anandwani, owner and lecturer of Anandwani Biology classes. Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Professor Nilesh Anandwani with a new topic and new video. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। हम जैसे कि आप लोगों को पता है हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एंजाइम के ऊपर भी अपलोड कर चुके हैं। तो एंजाइम के अंदर हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे एंजाइम व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। दूसरा हमने अपलोड किया था एंजाइम के ऊपर, वो था क्लासेस ऑफ एंजाइम, यू कैन से नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। और तीसरा जो वीडियो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी समझने के लिए। मान लो देयर आर 2 टेस्ट ट्यूब, सपोज देयर आर 2 टेस्ट ट्यूब। In test tube 1, raw material is starch. You can say substrate is starch. And in test tube 2 also, substrate is starch. Test tube 1, test tube 2. In both the test tube, substrate is starch and enzyme present, that is amylase. Enzyme present, that is amylase. Now in test tube 1, starch get converted into the maltose in 10 minutes. Now in test tube 2, starch get converted into same products such as a maltose, but it requires around 15 minutes. Substrate is same in both the test tube, enzyme is also same in both the test tube, but the problem is that in test tube 1, product is formed in 10 minutes, but in test tube 2, product formed that is in 15 minutes. So something factor is there which is adhering some problem, which is creating some problem. Therefore, substrate get converting into the product in just you can say 15 minutes, and some time extra is required. And this factor is generally called as a factors affecting rate of enzyme activity. So, what are actually the factors? तो वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, हमें वो अभी फैक्टर्स देखने हैं। तो नियर अबाउट एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए नियर अबाउट 5 फैक्टर्स होते हैं। तो वो जो 5 फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हम एक बार वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। ओके, नाउ इन केस सपोज देयर आर 3 टाइप ऑफ एंजाइम, देयर आर 3 टाइप ऑफ एंजाइम। दिस इज एंजाइम 1, you can say this is enzyme 2 and this is enzyme 3. Yes, enzyme 1, enzyme 2 and enzyme 3. And now we have a 3 substrate. These are the substrate and these are the enzyme. Now suppose this enzyme work at 4 degrees Celsius and this enzyme work at 37 degrees Celsius and this enzyme work at 71 degrees Celsius. So what will happen? At a 4 degrees Celsius, enzyme will become a inactive. At a 71 degrees Celsius, enzyme will become a denature. But enzyme will definitely work at the temperature of a 37. So it simply clearly says that optimum temperature which are required for the enzymatic activity is nothing but the 37. But if temperature is very low and if a temperature is very high, then these factors affect the rate of enzyme activity. So this is the first, you can say, factor which affect the rate of enzyme activity. Moving towards the second factor. Second factor is the pH. Now pH also plays very important role as a factors affecting enzyme activity. For example, now this is enzyme and front of us we have a 3 substrate. अभी ये एक एंजाइम है और सबस्ट्रेट हमारे सामने 3 है। सबसे पहला जो सबस्ट्रेट है उसका पीएच है एसिडिक, इसका पीएच है न्यूट्रल और तीसरे का पीएच है बेसिक और यू कैन से अल्कलाइन। दिस इज व्हाट पीएच। नाउ if a acidic substrate bind here with an enzyme, it requires
10 minutes to turn into product. If a basic substrate binds at the site of enzyme, it will require like suppose 10 minutes to convert it into product. But in case if a neutral substrate bind to the enzyme, then it will require around 5 minutes to convert it into product. It simply means that enzyme can react with an acidic substrate also, enzyme can react with a basic substrate also, and enzyme can react with a neutral substrate also. But the best reaction of an enzyme takes place with only when the substrate pH is the neutral. Such property is also known as a amphoteric. My dear student, आपको NEET में कभी-कभी पूछा जाता है कि which is a feature of a enzyme. So enzyme का एक ऐसा feature होता है जैसे हम बोलते हैं amphoteric nature of enzyme. Amphoteric का मतलब क्या होता है? Enzyme acidic substrate से भी bind हो सकता है, enzyme basic substrate से भी bind हो सकता है और दोनों के साथ reaction भी कर सकता है. लेकिन enzyme अगर substrate neutral pH का हो तो reaction fast होगी और product सबसे जल्दी से जल्दी तैयार होगा. This property is called as a you can say amphoteric pH and amphoteric property of enzyme, but this is also one of the factors which affect the rate of enzyme activity. Now moving towards the third factor and fourth factor. Now third factor is the substrate concentration. And fourth, you can say factor is exactly opposite. That is called, you can say enzyme concentration. अब ये substrate concentration और enzyme concentration exactly opposite होते हैं दो जगह. मैं आपको एक example देकर बताता हूँ. Now suppose this is the enzyme. Yes, and this is also the enzyme. And this is also the enzyme. Now front of us we have three enzymes, enzyme 1, enzyme 2 and enzyme 3. But raw material is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As you can see, the number of a substrate is a more, and enzymes which can bind with a substrate is only 3. Substrates are around 8 and enzyme is only 3. So only 3 substrate can bind with these 3 enzymes. It means other 5 substrate has to be in a queue, and timing required for converting that substrate, remaining 5 substrate into product will be required more, and that is why enzyme concentration plays very important role. Now if you think about exactly opposite, what is that? For example, you have one new enzyme number, you can say 4, enzyme number 5, enzyme number 6. Now you have enzymes are 6 but substrates are only 4. You have enzymes are 6 but substrates are only 4. So what will happen? 4 substrate will bind with a 4 enzyme, 4 substrate will bind with a 4 enzyme, and 2 enzyme will remain as it is, and it will become a vestigious. Now we know that enzyme is a protein in nature, and enzyme is produced by the protein synthesis process where there is a DNA, mRNA, tRNA and RNA all are involved. तो DNA, mRNA, tRNA, RNA ये सभी के सभी मिलके जो प्रोटीन बनाते हैं एंजाइम, ये पूरा वेस्ट हो जाएगा. तो मतलब 4 रॉ मटेरियल है और एंजाइम हमारे सामने 6 है, तो 2 एंजाइम ऐसे ही ना वेस्ट हो जाएंगे और उनका नंबर भी नहीं आएगा क्योंकि 4 एंजाइम 4 सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएंगे और 2 एंजाइम एक्स्ट्रा जो बचेगी वो वेस्ट हो जाएगी. सो you might be you understood substrate concentration and enzyme concentration. दोनों में मतलब क्या होता है? enzyme concentration में जितने enzyme substrate हो उतने enzyme होने चाहिए और substrate concentration में जितने substrate हो उतने enzyme होने चाहिए. और देखा जाए तो दोनों का मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता है. The number of enzyme should be equal to number of you can say raw material, or number of raw material should be equal to number of enzyme. When both are in equal concentration, then reaction will be best takes place. Fifth factors which affect the rate of enzyme activity is known as a inhibitor. Fifth factor is known as a inhibitor. Now what is inhibitor? Inhibitor can be defined as any substance which stop the reaction.
any substance which stop the reaction of an enzyme, it is called as an inhibitor. ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी बायोकेमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है डायरेक्टली, उस फैक्टर को हम बोलते हैं इनहिबिटर। तो इनहिबिटर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। पहला होता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। अभी दोनों में क्या फर्क होता है? मान लो अगर एक है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर तो ऑब्वियसली वो कंपटीशन करेगा, किसके साथ कंपटीशन करेगा वो मैं आपको बताता हूं, और दूसरा अगर है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर तो ऑब्वियसली वो कंपटीशन नहीं करेगा। ये आपको इजीली समझने के लिए मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूं। Okay, now suppose this is an enzyme. This is an enzyme, and this blue color shown is the substrate, and red color shown this is you can say inhibitor. अभी हमें पता है कि एंजाइम के यहाँ पे एक साइट होती है जिस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। जैसे हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एंजाइम के बारे में। एक्टिव साइट इज द साइट, जैसे हमने लोकेन की मॉडल में देखा था, एक्टिव साइट इज द साइट वेयर एंजाइम कैन इजीली फिट। सॉरी, एक्टिव साइट इज द साइट ऑफ अ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट कैन इजीली फिट। अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन है, देखो एंजाइम की ये साइट एक्टिव साइट, यहाँ पे सबस्ट्रेट भी इजीली बैठ सकता है और यहाँ पे इनहिबिटर भी इजीली बैठ सकता है। अभी होता क्या है, अगर मैं आपको पूछूं कि एंजाइम पे सबस्ट्रेट इजीली बाइंड होगा या इनहिबिटर इजीली बाइंड होगा, तो आप मोस्ट प्रोबेबली बोलोगे सबस्ट्रेट इजीली बाइंड होगा। But my dear student, for your kind information, I would like to tell you and just remember this in your mind. सबसे पहले सबस्ट्रेट की जगह पर सबस्ट्रेट से पहले इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, just because inhibitor has a capacity to bind with the enzyme 250 times more faster as compared to the substrate. इनहिबिटर के पास एंजाइम से बाइंड होने की कैपेसिटी सबस्ट्रेट से कंपेयर में 250 टाइम ज्यादा होती है, 250 टाइम्स ज्यादा होती है। और अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एंजाइम से अब ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा, डायरेक्टली कौन बाइंड हो जाएगा, इनहिबिटर वो बाइंड हो जाएगा। एंड नाउ सपोज इफ इनहिबिटर इज बाउंड विद एंजाइम एक्टिविटी विल बी स्टॉप। व्हाई इट विल स्टॉप? बिकॉज़ दिस इज द इनहिबिटर। व्हाट इज इनहिबिटर? एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच स्टॉप द रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ इनहिबिटर। अब इसे हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इस इनहिबिटर को सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करने दी। कौन सी कंपटीशन? एंजाइम से बाइंड होने की। मान लो दो पार्टिसिपेंट है, उन दोनों को रेस लगानी है और एक टारगेट तक पहुंचना है, तो वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों पार्टिसिपेंट है, सबस्ट्रेट भी पार्टिसिपेंट है और इनहिबिटर भी पार्टिसिपेंट है, और टारगेट जो लकीर को क्रॉस करना है वो है एंजाइम। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट भी कंपटीशन कर रहा है इनहिबिटर से और इनहिबिटर भी सबस्ट्रेट से कंपटीशन करती है, और दोनों को बाइंड करना है एक्टिव साइट। अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता तो एंजाइम की रिएक्शन होती, और अगर इनहिबिटर बाइंड हो जाता है तो एंजाइम की रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड हो गया है तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बिकॉज़ दिस इनहिबिटर मेक अ कंपटीशन। अभी दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ हमें कंपटीशन नहीं करनी है, तो किसके साथ कंपटीशन करनी है? किसी के साथ नहीं करनी है। हम देखते हैं आगे। नाउ दिस इज द एंजाइम, दिस इज द एंजाइम, and front of us we have blue color mark that is a substrate and second one is the red color mark that is a inhibitor। अभी एंजाइम में दो एक साइड होती है, एक साइड को हम बोलते हैं एक्टिव साइड जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और दूसरी साइड को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइड, जैसे हम बोलते हैं जहां पे कौन बाइंड होता है, इनहिबिटर। सो नाउ in enzyme there are two sides, one is the active side where substrate can bind and second side is the allosteric side where inhibitor can bind. In case if a substrate binds to active side then reaction is processed, but before substrate binding जैसे मैंने आपको बताया inhibitor 250 टाइम faster अटैक करता है, तो inhibitor सबसे पहले allosteric साइड पे पीछे से आके बाइंड हो जाएगा, और जैसे allosteric साइड पे inhibitor पीछे से आके बाइंड होता है तो एक्टिव साइड पे अगर सबस्ट्रेट बाइंड होता भी है तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कोई मुझे यहाँ से आके कुछ बुलाता है, सर कैन आई आस्क यू, तो मेरा कंसंट्रेशन उसकी तरफ हो जाएगा। देखो मैं खड़ा आपके सामने ही हूँ लेकिन मेरा कंसंट्रेशन उसकी तरफ है। सेम वे अगर इनहिबिटर
एंजाइम को पीछे से बाइंड हो जाता है तो सबस्ट्रेट बाद में एक्टिव साइट पे बाइंड होगा भी तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ऐसे ही ये सभी के सभी क्या हुए, ये सभी के सभी क्या हुए, ये सभी के सभी फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को, उसके रेट को कम करते हैं, उसकी एक्टिविटी को, उसके रेट को कम करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो हमने एंजाइम डिस्क्रिप्शन, एंजाइम प्रॉपर्टी का वीडियो देखा, हमने टाइप्स ऑफ एंजाइम, क्लासेस ऑफ एंजाइम, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम अकॉर्डिंग टू द आईयूबी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी देखा, और अभी हमारा पॉइंट था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री यू कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ कैटलिस्ट। सो दिस वाज अ वीडियो अबाउट द एंजाइम। इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा वो पूरे के पूरे मतलब बायोमोलिक्यूल के ऊपर आपने जो भी वीडियो देखे हैं उसके ऊपर है ना एमसीक्यू का होगा, 50 एमसीक्यू। जैसे हमने सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन के ऊपर करवाया था, वैसे ही बायोमोलिक्यूल के ऊपर करेंगे। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और घंटी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।